Hello, students. Welcome back to my channel, The Theory of Humanities. आज हम लोग अपना ज्योग्राफी का फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. अब हम इस चैप्टर में पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे है और उसकी डेंसिटी क्या होती है और ग्रोथ क्या होती है, हर एक वर्ड को डिटेल में समझेंगे. सो अगर पूरी दुनिया में 8 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्या ये लोग हर जगह बराबर रहते हैं या फिर क्या सहारा डेजर्ट और मुंबई की पॉपुलेशन सेम है क्या? बिल्कुल नहीं. आज हम जानेंगे कि कुछ लोग कुछ जगहों पर ज़्यादा क्यों रहते हैं और कुछ जगहों पर बहुत कम क्यों रहते हैं. लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है. सो पॉपुलेशन मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ जोग्राफिकल एरिया. What is population? Population means the total number of people living in a geographical area. ठीक है. सोचो तुम्हारे स्कूल में अगर 2000 स्टूडेंट्स हैं तो तुम्हारे स्कूल की पॉपुलेशन होगी 2000. ओके. अगर किसी सिटी में 10 लाख लोग रहते हैं तो उस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख होगी. सो population is equals to total number of people living in a particular area. Let's change the color. मुझे बहुत मज़ा आता है कलर चेंज करने में, इंटरेस्टिंग लगता है. Population is equals to, let's take a red first. Population is equals to total number of people living in a particular area. ये सारी चीज़ें थोड़ा नोट करते जाना, शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ है ये. सो पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ. सोचो इंडिया के पास बहुत सारा गोल्ड है लेकिन अगर उस गोल्ड को यूज करने वाले लोग ही नहीं हैं तो क्या फायदा गोल्ड का. गोल्ड खुद थोड़ी फैक्ट्री में चला जाएगा, मशीन्स खुद थोड़ी काम करने लग जाएंगी. सो ह्यूमंस ही रिसोर्सेज को यूज करते हैं. इसीलिए पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है. जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है फिर भी डेवलप्ड कंट्री है. क्यों? स्किल्ड पॉपुलेशन. People are called the real wealth of a country. They utilize resources and help in development. Okay, so now let's come to why study population. क्यों पढ़ना है भाई population? ऐसा क्या है population में? Why study population? So, we study population because we need to know कितने मेल्स और फीमेल्स हैं, बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, लोग सिटीज में रहते हैं या विलेजेस में रहते हैं, लिटरेसी रेट कितना है, लोग क्या काम करते हैं. गवर्नमेंट को स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जॉब्स प्लान करने के लिए पॉपुलेशन डाटा चाहिए होता है. समझ में आया? Population study help us know. Let's write why study population. So the answer is population study helps us know first one birth rate,
second point, death rate. Third point, literacy. Fourth point, occupation. Fifth point is urban rural population. Now, world population. Let's come to the page first. So, at the beginning of the 21st century, you know, world population crosses 6 billion. 21st सेंचुरी की शुरुआत में दुनिया की पॉपुलेशन जो थी 6 बिलियन थी. आज 2026 ये 8 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है. सोचो, हर सेकंड दुनिया में लगभग 2-3 बेबीज बोर्न होते हैं. इसी वजह से पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है. बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, लेट्स दिस इज द डाटा, तो आपको ये थोड़ा सा ना नोट करना पड़ेगा. मैं लिख दूं? ओके, आई राइट इट डाउन. More than 6 billion people. Today, more than 8 billion people. Why do people prefer, certain regions? Okay, why do people prefer to live in certain regions and not in others? So इसका आंसर ये है कि कुछ जैसे लाइक फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट, पॉपुलेशन बहुत कम है. क्यों? वाटर नहीं है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है. लाइक सेकेंड एग्जांपल लेते गंगा प्लेन्स, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि फर्टाइल सॉइल है, वाटर अवेलेबल है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है. So, easy formula है, good living conditions, more population. Bad living conditions, less population. Why? इस क्वेश्चन का आंसर, दिस इज द क्वेश्चन, ओके, और इसका आंसर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, that let's take it, good living conditions, more population. Okay, and bad living conditions means less population. Okay, now here George B. So next thing is George B. Cressey. So इन्होंने ना एक definition दी जिसमें कि उन्होंने बोला Asia has many places where people are few and few places where people are very many. ऐसा क्यों कहा? फॉर एग्जाम्पल समझते हैं. हिमालयाज पॉपुलेशन कितनी कम है आप लोग को पता है, लेकिन इंडो गंगेटिक प्लांट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इसीलिए क्रेजी ने कहा एशिया में कई जगह लोग बहुत कम हैं और कुछ जगह बहुत ज़्यादा हैं. सो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, जो कि बोर्ड्स में काफ़ी बार आता है. तो आपको ये डेफिनेशन दे दी जाएगी, ये डेफिनेशन दी किसने, आपको याद करना पड़ेगा. और इस डेफिनेशन के थ्रू आपको और हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अर्थ की सरफेस पर लोग
किस तरह से बिखरे हुए हैं। इमेजिन अ क्लास, फ्रंट बेंचेस पैक, बिल्कुल ठीक है, बैक बेंचेस ऑलमोस्ट एम्प्टी। यही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 10% लैंड में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, दुनिया के ज़्यादा लोग बहुत छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका थोड़ा सा हम लोग नोट्स बनाते हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन population distribution arrangement of people over Earth's surface. Second is 90% population lives on only 10% land area. Okay. Now let us look most populous countries. ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। टॉप 10 कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, आफ्टर दैट इंडिया, देन यूएसए, देन इंडोनेशिया, देन ब्राज़ील, देन पाकिस्तान, देन नाइजीरिया, देन बांग्लादेश, देन रशिया, देन मेक्सिको। ओके, एशिया कंट्रीज इन टॉप 10। अब एशिया से कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो मैं रेड डॉट कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि इंडिया, एशिया की कौन सी टॉप 10 कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। फर्स्ट इज चाइना, इंडिया, एंड आफ्टर दैट इंडोनेशिया, आफ्टर दैट पाकिस्तान, आफ्टर दैट बांग्लादेश, आफ्टर दैट रशिया। दीज आर द कंट्रीज जो कि एशिया की टॉप 10 पॉपुलस कंट्रीज में आती। ओके, सो what we have studied, let us revise little bit. Total number of population, population क्या होती है। चलो अब बहुत अच्छा काम करते हैं, हर वर्ड की ना डेफिनेशन लिखते चलते हैं और तुम लोग नोट्स बनाओ, ठीक है। पॉपुलेशन, बेटा लास्ट तक क्लास देखना, बिकॉज मैं ना ये जो शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ ना, रामबाण है, बहुत अच्छे से याद होगा तुम लोगों को। टोटल नंबर ऑफ पीपल living in an area, एंड कीवर्ड है इसका पिंक से लिखते हैं यार, पिंक भी बहुत अच्छा कलर है। रियल वेल्थ। ओके, ओ शिट, ओके, तो दिस इज समथिंग, इट्स अ डेफिनेशन ना। टोटल, ठीक है। सेकेंड आता है, हम लोगों ने पढ़ा रियल वेल्थ। सो यार ऐसा करते हैं ना, इसको निकाल ही लेते हैं, डन। पीपल आर द रियल वेल्थ of a nation. Population distribution, the population distribution क्या होती है। Pattern of the spread of population on Earth's surface. Let's write this, pattern of आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, वट एवर यू प्रेफर।
बट इट्स रियली गुड, लाइक फॉर मी ऐसे ही नोट्स हेल्प करती हैं मुझे। मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे दोबारा से ना बुक लिखना नहीं पसंद है कि पूरी पूरी बुक लिख लो और फिर बैठ जाओ। एक तो रीड, अब अपन ना 12th में आ गए, बोर्ड्स है, लास्ट मोमेंट में ना यही सारी नोट्स ना हेल्प करती हैं। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पैटर्न ऑफ स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन ऑन अर्थ सरफेस। उसके बाद आता है, अब चलो हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ओके, 90% population lives on 10% land. Okay, इसको green से लिखते हैं because this is very important. This name is very important. George B. Cressey. स्टार मार्क कर लो और कभी भी मत भूलना इस नाम को। He gave a definition. मैं पूरी definition लिख देती हूँ, ठीक है? Asia has many places where people are few and few places where shit, places where people are few and few places where are very many. And this definition tells the uneven distribution of population. ओके, सो दोस्तों आज हम लोगों ने समझा कि पॉपुलेशन क्या होती है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि लोग किसी देश के रियल वेल्थ होते हैं, लाइक पीपल आर द रियल वेल्थ। ओके, क्योंकि और क्यों होते हैं, पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, अलग पॉपुलेशन क्या होती है, पीपल, व्हाई पीपल आर द रियल वेल्थ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ सर्फेस में अनइवन क्यों है। यहाँ पे भी हम लोगों ने समझा, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, गुड लिविंग कंडीशंस, मोर पॉपुलेशन, बैड लिविंग कंडीशन, लेस पॉपुलेशन, दिस इज the reason for your uneven distribution of population. In next video we are going to study the next topics, and I want to say that मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ विथ शॉर्ट नोट्स। ये जो आपके, आप अपनी बुक में भी ऐसे लिख लोगे ना, जैसे मैंने साइड में लिखा हुआ है, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज मुझे भी हेल्प किया है। सो आई सजेस्ट कि आप ऐसे ही पढ़ाई करो और लेट मी नो कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आ रही हैं या नहीं, एंड इफ़ नॉट लेट मी नो, मैं इम्प्रूव करूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 12th।